In the same way, let's move on to the next question, very important question, another 5-mark derivation from first chapter. Derive expression for electric field. Okay, derive expression for electric field due to a dipole at a point on equatorial line. At a point on equatorial line. This is the question. Okay, I hope you have come across this question also. Now let's move forward. How to solve this particular question? Okay, the solution. We need to learn how to draw the figure. Initial explanation can be easily understood. Once you draw this, minus q plus q, and then center O, total distance 2a. Okay, this distance is a little bit, okay, now I think this is right. After this, he has told equatorial line, so just draw the equatorial line that passes through the center. Consider some point there. From there, we'll just join the line for the equatorial line. Yes, so this is the line. Okay, I've just redrawn this. Minus q plus q, center is O, and this is your equatorial line. This is point P which we have considered. So due to plus q, you will have electric field going this way, and due to minus q, you will be having electric field going to this way, minus q and E plus q. Okay, you need to make sure these two arrows are aligned. Okay, that you can make sure with the scale. This angle, let us say it is theta, this will also be theta. Why? Because ये देख लो नीचे वाली लाइन करेक्ट मिडल O है, तो दोनों तरफ लाइन इक्वल है, करेक्ट, एंड सेंटर पॉइंट से पॉइंट P लिया गया है, तो ये लाइन और ये लाइन सेम है. So obviously the angle made between them will be equal, that is theta. Next, after this what we do is we resolve the components of E plus q and E minus q. E plus q, when you resolve this way you will get 1, and this way you get 1. Okay, and what will be the values? This will be theta itself, because from here it is coming, from this guy. Okay, I think you understand these two angles are corresponding angles. Similarly, this and this part you will get alternate angles, so this will also be theta. So this one will be E plus q cos theta, and this will be E plus q sin theta. Similarly, for this guy E minus q, you will mark this way again, double arrows here, E minus q cos theta, and niche E minus q sin theta. Clearly, when I solve this, what happens? E plus q and E minus q will get cancelled. Sin theta components, cos theta components will add. Okay, cos theta components will add. So with this basics we can start. You can start writing the initial introduction. Already I have explained how to write in the last derivation. I don't think there is a need to re-explain that. After this, the next step will be again from definition of electric field. You will write the definition of electric field, 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. Then, okay, we have forgot to mark here, this direction is minus p cap. Okay, minus q to plus q charge, the direction is minus p cap, and this is the direction of minus p cap. Okay, so let us move forward. After writing the definition, the next step was electric field due to plus q charge, E plus q मिलेगा, 1 by 4 pi epsilon naught, क्या मिलेगा, plus q divided by, this is A, this is B, so I can write Bp square. Okay, similarly for E minus q क्या मिलेगा, 1 by 4 pi epsilon naught q by Pa square. Okay, directions along Bp and along Pa. Okay, so this will be the initial part. Now resolve करने के बाद, let us observe the figure. resolve करने के बाद क्या हो रहा है? Yes, resolve करने के बाद ये हो रहा है कि डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर P कैप है दिस वे, Q E plus Q E minus Q cos थीटा ऐसे जा रहे हैं दिस डायरेक्शन पे,
ऊपर वाला और नीचे वाला कैंसिल हो गया, तो रिजल्टेंट ये दो ही करेंगे, isn't it? So with this we can write the next step. We can write resolving the electric field vectors into components. We see that vertical components cancel each other and horizontal components add each other. ठीक है, horizontal components add each other. With this point we can now write E net is equal to, just observe before writing this I am showing, अब जो भी हमारे पास है it is this guys, E plus Q cos theta and E minus Q cos theta going the negative direction of E P cap, isn't it? So I can write this as, how will I write? This can now be written as minus, or for your, okay, let me, yeah, E plus Q cos theta plus E minus Q cos theta, okay, both are having the direction of minus P cap, isn't it? And also here E plus Q is equal to E minus Q in terms of magnitude. You can see the above equations. With this you can write any one, we can write minus 2 times E plus Q cos theta P cap is the final expression which you are getting. Okay, next up, now it's all about substituting this minus 2 times E plus Q क्या है 1 by 4 pi epsilon naught Q by E plus Q था BP square. अब थोड़ा जल्दी से BP square क्या होता है वो देख लेते हैं. Okay, I'm drawing another triangle here just to understand. Yeah, in this, just a minute. Okay, what is happening is नीचे A है, यहाँ पर R है, distance from center to point P is always R ना. Okay, तो यहाँ पर ये क्या होगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा. सो बी पी स्क्वायर जो हमारा है, बी पी दैट इज़ रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर पी है. ओके, सो विद दिस यू कैन राइट बी पी स्क्वायर एज 1 by 4 pi epsilon naught Q by बी पी स्क्वायर कैन नाउ बी रिटन एज root of r square plus a square the whole square. Then cos theta from this angle, from this triangle, cos theta is opposite by, adjacent by hypotenuse, that is a by root r square plus a square. This will be cos theta and then p cap. Okay, I hope this is clear. Now let us try to write the next step. ये देखो स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, माइनस 2 टाइम्स 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल्ड द पावर, ये 1 है, यहाँ पर 1 बच गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर हाफ हो गया, 1 प्लस हाफ होगा. जब आप ए पावर एम इंटू ए पावर एन यूज़ करोगे दैट विल बी इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन. यूजिंग दिस 1 प्लस हाफ 3/2 आएगा, तो नीचे 3/2 आ जाएगा और ऊपर का ए इसके साथ जुड़ जाएगा और बाजू में पी कैप लिखना था. ओके, अब Q 2A और P बनेंगे वेक्टर P, isn't it? सो हमारा आंसर अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट माइनस वेक्टर P बाई ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल्ड द पावर 3/2 बन जाएगा. एज इट इज़ R इज़ मच मोर ग्रेटर देन ए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैन नाउ बी अप्रॉक्सीमेटेड टू आर स्क्वायर. So E net becomes 1 by 4 pi epsilon naught minus P by R cube, because अंदर का स्क्वायर और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 3 बचेगा. So this will be the equation for the equatorial line वाला derivation. Okay, just fast forward, go through this what we have done. I think that will be solving the issue. Just look at the problem how we have solved. ओके, माइनस क्यू लिया प्लस क्यू लिया, बेसिक्स मार्क कर दिया, पॉइंट पी डिस्टेंस आर. ओके, उसके बाद एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एक नीचे को, फिर उनको रिजॉल्व किया, 2 कंपोनेंट्स ऐसे आए, एक कंपोनेंट ऊपर एक कंपोनेंट नीचे, और फिर ऊपर का नीचे का कैंसिल हो गया. उसके बाद बेसिक हमने यहाँ लिख लिया, थीटा डालेंगे तो ये क्या बनता है पी बी और पी ए क्या बनता है.
उसके बाद डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस क्यू E माइनस क्यू, रिजॉल्विंग द वेक्टर्स, कैंसिलिंग ऑल दोस हॉरिजॉन्टल एंड ईच अदर, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद सिंपल सब्स्टिट्यूशन E प्लस क्यू जो लिखा था कॉस थीटा ट्रायंगल से, जो ऊपर वाला ट्रायंगल है वहाँ से ले लिया, इजंट इट, एंड उसके बाद सब्स्टिट्यूशन एंड देन रीअरेंजिंग देम, दैट्स ऑल। आफ्टर दैट व्हाट वी डिड वाज r square plus a square is equal to r square लिख लिया, when r is much more greater than a we came to the final formula. So I hope this particular problem, the derivation, very important, many times asked in the board exam, I hope this is clear. Okay, thank you.